निकलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर
सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं, बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है।
राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य
भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे
नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा, मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। जानकी दास जी, अब मंच पर आ जाइए। माननीय मोहन राव जी, भैया जी कहीं मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। संकल्प है देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, संगीत यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व विषय की है। समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो मां कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में। आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी के तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धराधाम, अयोध्या धाम, सरयू, सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, शंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विष्णुनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वरकरी, वीरशैव, हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है। और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ,
मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए, और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है, तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा है, तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं। उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है। तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं, और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से, श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वह आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम। और निश्चित तौर से ये आज एक संकल्प के सिद्धि का दिन है, और आज ही एक शपथ लेने का भी दिन है, आज ही एक और सौगंध लेने का दिन है, जिसमें कहा जाता है कि अजय्याम च विश्वस्व देही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत, श्रुतम चैवयत यत्कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना दे, और सभी कंटकाकीर्ण मार्गों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वैभवम में नेतु मेत स्वराष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करें, और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धराधाम से आज इस युगांतकारी क्षण में दुनिया को दिया है। और इस वक्त आप देखिए संतों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद संत जन चल चुके हैं प्रभु श्री राम के उस अलौकिक और दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए, जो बाल रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया को मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्यों न हो। अयोध्याम च परब्रह्म सरयुः सगुणपमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान शिव जो कि जगत गुरु हैं, भगवान शिव जो श्री राम के सखा हैं, भगवान शिव जो श्री राम के स्वामी हैं, स्वयं मां पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या जो परब्रह्म स्वरूपा है, सरयू का तीर्थ जो कि साकार जलाकार परम पुरुष परमात्मा की स्वरूपा है, उस अयोध्या के निवासी समस्त जीव जगन्नाथ स्वरूप हैं। जो इस वक्त सांस ले रहे हैं अयोध्या में, वो भी अयोध्यावासी हैं। जो अपने मन से इस दृश्य को देख रहे हैं, वो भी अयोध्यावासी हैं। जो परिकल्पना कर रहे हैं कि वो कभी अयोध्या आएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, वो भी इस वक्त अयोध्यावासी हैं। और अयोध्यावासी हैं इसीलिए जगन्नाथ स्वरूप हैं। और उन सभी जगन्नाथ स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के प्रेमी संतों के चरणों में, चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए बार बार वही धुन निकलती है कि भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन वो संतों के मन में रमते हैं, इसीलिए तो वो राम कहलाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं संतों का हुजूम, 8000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों में संतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और अनेकानेक बलिदानों के बाद जो आज प्राप्त हुआ है अयोध्या की धरा को,
भारतवर्ष की धरा को आज संत विह्वल होंगे, उनके नयन सजल होंगे भगवान श्री राम को अपने बीच पाकर, अपने बीच एक नव्य और भव्य रूप में पाकर, उस कृष्ण वर्ण की 5 वर्ष के बालक के रूप में राघव को पाकर, जो आज कलयुग में त्रेता युग से उतर करके आए हैं और सभी को दर्शन कर कृतार्थ दे रहे हैं। कितनी अलौकिक छवि, कितनी दिव्य छवि। आप भी अपने हृदय में उनको समा लेना चाहते होंगे, सजो लेना चाहते होंगे, और आप सभी का मन कर रहा होगा कि एक बार तो आए अयोध्या में और अयोध्यावासी बन जाए, स्वयं जगन्नाथ बन जाए। और ये समागम है, आज संगम हुआ है विविध मत, धर्म, पंथ, संप्रदाय का। 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी, जनजातीय परंपराओं की उपस्थिति इस आयोजन को समग्र समावेशी बनाती है। पहली बार भारत की इस बहुरंगी संस्कृति का ऐसा भव्य आयोजन इस धरती पर हुआ है, इस देश में हुआ है, आर्यावर्त में हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है। और धन्य है यह अयोध्या धाम जहां पर इतना बड़ा समागम हुआ है। ये संगम आज श्री राम जन्मभूमि के दिव्य नव्य प्रांगण में हुआ है। निश्चित तौर से दुनिया आज देख रही है कि किस तरीके से एक नए भारत का उदय हो रहा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जब दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी शाश्वत है, सनातन है। सनातन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राम जी के भइले जनमवा चलवो करियाई दर्शनवा। छल के सुख के छत्रपति सिंह दिलीप, छत्रपति और दिलीप दोनों मंच की ओर आ सकते हैं। आ जाओ, धैर्य से चलिए। छत्रपति सिंह और दिलीप दोनों अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो, मंच पर आने का बारंबार निवेदन करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मोरे राम अवध घर आए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मोरे राम अवध घर आए, 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 मोरे राम अवध घर आए। संतोषी अखाड़ा के महंत जी को मेरा प्रणाम। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना। आगे चले राम चले, पाछे चली सेना। हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर 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 आए। अरे घर घर लोग
वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी। और आप समझिए कि जिस पक्षी को, जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी। उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की। वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, मां शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को। उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया। और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे, लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा है। भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की। यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है। यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है। यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है। और यही हमारी संस्कृति है जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतः स्तर पर, अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है। और निश्चित तौर से हमारी ही संस्कृति में कहा गया है धर्मः रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। भगवान शिव ने के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रभर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय। विश्व के कल्याण के लिए हलाहल को पीना, विश्व के कल्याण के लिए विष का वमन करना हमारी ही संस्कृति में है। और ऐसे ही आराध्य देव महादेव की वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः, नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं, शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणं, वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः, यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ, शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्राचीन कुबेर का टीला, जहां पर अब आधुनिक रूप में जटायु जो कि पक्षी की श्रेणी में त्रेता युग में उन्होंने
माँ सीता की सेवा में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिन्हें भगवान श्री राम ने गले लगाया, आज वो फिर से अयोध्या की धराधाम पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। एक बार फिर से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिपाक्षी में थे, वही स्थल जहां पर जटायु का सबसे बड़ा मंदिर है, वही स्थल जहां पर जटायु को सद्गति प्रदान की गई थी, वही स्थल जहां पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। आज एक बार फिर से जटायु उसी पराक्रम के प्रतीक के रूप में, जो कि अत्याचार के खिलाफ है, उसी उत्सर्ग के प्रतीक के रूप में, जो धर्म के प्रति उत्सर्ग का द्योतक है, आज फिर से जटायु श्री अयोध्या धाम में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, कुबेर टीला। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उस दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महान जटायु जो कि बाद में हरि रूप हो गए, स्वयं भगवान के रूप में वो अपने वैकुंठ धाम में श्री राम ने उन्हें भेजा। आज फिर से वो जटायु अयोध्या में पधार चुके हैं। और केवल जटायु ही क्यों, मुझे लगता है कि अनंत अनंत आत्माएं इस वक्त अयोध्या की धराधाम में आ चुकी हैं, अवतरित हो चुकी हैं, भगवान श्री राम का बाल रूप में दर्शन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपनी कुछ न कुछ भेंट भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। अगाध श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान उन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो यहां बताना उपयुक्त होगा। राम व्यक्ति को नहीं, वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रवृत्ति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शान, हमारा भाल, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहाँ, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ। ये उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले खुद किए थे, खुद लिखे थे, उनकी लेखनी है। तो निश्चित तौर से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सनातन संस्कृति के प्रतीक राम, सत्य शाश्वत सनातन प्रभु श्री राम, भारत के आत्म तत्व श्री राम, जब आज उनका अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है, तो यह क्षण पूरे देश, पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए विलक्षण है। इस वक्त आप समझिए अयोध्या धराधाम में जो उपस्थित हैं शरीर से, उनको कितने आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद के सिंधु हैं। उनकी एक बिंदु से कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। उनके नाम में ही र आ म में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के तत्व के रूप में अमृत की वर्षा होती है। और वही श्री राम आज फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं जन जन में, मन मन में। भगवान नारद की वीणा की स्वर लहरियां अनंत अनंत ब्रह्मांड को इस वक्त श्री राम नाम की धुन से गुंजायमान कर रही हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सखा और सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव शंकर अपने डमरू की नाद से तीनों लोगों को आनंदित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में हमारे राजा पुरंदर मृदंग और सभी देवता मजीरे, झांझ और घंटे घड़ियाल की सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जटायु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी और वह जटायु जिन्होंने त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो एक योद्धा के रूप में, एक वीरव्रती के रूप में, एक राम के भक्त और अनन्य जीव के रूप में उन्होंने रावण का सामना किया। घायल हुए, वीरगति प्राप्त होने से पहले सद्गति देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं प्रस्तुत हुए। और भगवान श्री राम के ही भुजाओं में जटायु का स्वर्गवास होता है, सद्गति प्राप्त होती है। ऐसा विरला क्षण किसी को नहीं प्राप्त होता। त्रेता युग में एक पक्षी को भी आप देख सकते हैं इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर पर जो मंदिर है उसके पास जो कुबेर टीला है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मंदिर है, कामेश्वर महादेव का जो पुराना मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार राम मंदिर ट्रस्ट नहीं करवाया है, पहले से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद था। उस मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो कुबेर टीला है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये पूजा अर्चना की है। करीब 100 फुट ऊंचा है और मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। तो इस मंदिर प्रांगण में सिर्फ राम लला ही विराजमान नहीं है, अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। भव्य मंदिर बनाया गया है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री
जटायु जी, पक्षी राज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से कभी, रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है निखिल। जी निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है। और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, रामलला का विग्रह देख रहे हैं, ये अब जीवंत हो उठी है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, ऐतिहासिक रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस परिसर में अगर कहा जाए तो अयोध्या धाम और ये में जो मौजूद प्रतिमा है, है इसको आप देखेंगे तो इसमें बाल तत्व भी है, देव तत्व भी है और राजकुमार की छवि भी है। जी निश्चित तौर पर बेहद सौम्य मुद्रा, बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है। जी निश्चित तौर पर। और ये सबके मन को मोहने वाली है, मन को हरने वाली है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं, सदियों की अभूतपूर्व त्याग, बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे राम आ गए हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के स्व की चेतना भी लौटी है प्रधानमंत्री के शब्दों में। और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लिए गए हैं आज इस राम मंदिर परिसर से, इस प्रांगण से। और भगवान राम के सामने वो सौगंध ली गई है विकसित भारत बनाने की। ये इस बात की सौगंध ली गई है कि अब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। और ये जो समय है यही उत्तम समय है, यही सही समय है। और इस समय को खाली नहीं जाने देंगे। और राम मंदिर के इस निर्माण के बाद, इस भव्य दिव्य अयोध्या के में श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर निर्माण के बाद आखिर आगे क्या, इस सवाल पर भी बहुत खुले मन से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। और कहा कि ये एक तरह से कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है 22 जनवरी 2014, लेकिन बल्कि ये एक नए कालचक्र का उदय है। और ये सकारात्मक है, ये हमें प्रेरित करता है, ये हमें आगे की ओर ले जाता है। कि इस तारीख को कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नहीं बल्कि हजारों सालों तक इस तारीख को याद रखा जाएगा, इस दिनांक को याद रखा जाएगा, क्योंकि ये कालचक्र है और यहाँ से भारत जो है वो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। जी बिल्कुल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। उन्होंने एक सर्व समाज की बात कही। उन्होंने जब आप विनय की बात कर रहे हैं तो इस जो रामलला की जो मूर्ति है इसमें विनय का भाव, सौम्यता का भाव जो है वो साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही आज कि रामलला टेंट में थे और अब महल में पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। जब हमें तस्वीर देख रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गुलाबी रंग के कनात के बीच, टेंट के बीच में रामलला को रहना पड़ता था। वहां पर सिंहासन की जगह जो है वो नुकीले पत्थर निकले हुए थे। और उन्होंने हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फूलों की जगह पर वहां पर नुकीले पत्थर थे, बंजर टीला था और वहां पर रामलला रहे थे। और आज वो रामलला जो है एक महल में प्रवेश कर गए हैं और दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा हमारे दर्शक देख सकते हैं। वो आभा मंडल नजर आ रहा है रामलला को। और रामलला को का स्थान यही था, यही रामलला को विराजित होना था। और आज रामलला 500 साल की तपस्या के बाद यहाँ पुनः विराजित हो गए। और ये कुबेर टीले पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। ये जो पूजा अर्चना का काम पूजा अर्चना जो कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपसे की ये तस्वीरें हैं, इसको हमने आपको लाइव भी दिखाया था। और ये तस्वीरें कबीर का टीला की हैं। जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल कि ये एक तकरीबन 100 फीट ऊंची जगह है। और श्री राम के अयोध्या धाम में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जो आपने कहा कि श्री राम ही नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवता विराजमान। जी, इसका एक बहुत अलग महत्व ये भी है कि ये ऐसा माना जाता है इस कुबेर के टीला के बारे में कि जब राम जी यहाँ पर खेलते थे, जब राम जी यहाँ पर रहते थे, तब भी ये मौजूद था। और उसके बाद इस कुबेर के टीले पे महादेव का तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है राम मंदिर ट्रस्ट ने, बल्कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, माता पार्वती की प्रतिमा है, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर जी स्वयं यहाँ पर, और 9 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस कुबेर के टीले का बड़ा ही महत्व है। पुरातन काल में भी जब भव्य राम मंदिर हुआ करता था पहले, तो उस दौर में भी जो है कुबेर के टीले का एक खास महत्व था और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और इसी कुबेर के टीले पर जटायु राज
की भी एक विशाल प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आपने दो बातें कही, उनको मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि भगवान राम की ये जो प्रतिमा है ये सौम्यता और विनय भी दर्शाती है, और भगवान राम का जो चरित्र है वो उदात्त है, सौम्य है, दिव्य है, भव्य है और पराक्रमी भी है। बिल्कुल। तो जो सौम्यता और पराक्रम का अद्वितीय रूप है वो भगवान श्री राम का रूप है। और आपने दूसरी बात जटायु की बात कही है, जटायु का टीला है, दरअसल जटायु की तस्वीर का अनावरण कर दिया है। अनावरण कर रहे हैं उस प्रतिमा का। ये देखिए कितनी भव्य ये मूर्ति है, और निश्चित तौर पर जटायु, गिद्धराज जटायु आज भी याद किए जाएंगे। कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जानते थे कि वो महाबली रावण के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे उनके विरुद्ध, उसके बावजूद यहाँ तुलसीदास जी का हमें जिक्र करना जरूरी है, जो उन्होंने जटायु के पूरे चरित्र का वर्णन किया है। जब जटायु सीता हरण को रोकने में भले नाकाम हो गए, लेकिन अपने प्राणों का जो उन्होंने बलिदान दे दिया, और जब घायल अवस्था में थे और जब राम उनसे मिलने पहुंचे तो पूरे रामचरितमानस में जटायु और श्री राम के जो संवाद का जिक्र आता है वो बड़ा ही सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि परहित बस जिन्हें के मानी माही, तिन्हु कहूं जग दुर्लभ कुछ मनाही, तनु तीज तात जाहू मम धामा, देहू काह तुम्हें पूरन कामा। यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव भीना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में, और आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। और ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरसों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए इस तरह का आत्म उत्सर्ग करना जो व्यक्ति करता है उसे सदियों तक, सदियों ही नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं जब प्रधानमंत्री जटायु राज की इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रसंग का वर्णन किया गिद्धराज जटायु और भगवान श्री राम के उस प्रसंग का, वहाँ और भगवान राम के जब पराक्रम की बात कहते हैं जी, तो एक प्रसंग ये भी है रामचरितमानस में और रामायण में कि जटायु जी का सर जो है वो भगवान राम के गोद में था और वो उनके सर को सहला रहे थे और वो अंतिम सांसें गिन रहे थे जटायु। ये देखिए ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी, क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री को बाकियों से अलग करती है, ये भाव बताता है। जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जो इस तरह से मेहनत की है और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही असली नींव के पत्थर हैं। और अभी श्रम देवता है, हम दूरदर्शन पे भी हमने इनके कई इंटरव्यूज दिखाए श्रमवीरों के, और ये लोग जो बातें बताते थे कि जब अपने गांव में लोग जाते थे और कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो गांव में इनके पैर लोग छूते थे। तो ये अपने आप में जो है सिर्फ श्रमिक नहीं है, श्रमवीर है, ये असली राम भक्त हैं, इसीलिए जिनकी मेहनत पर यह राम मंदिर खड़ा हुआ। प्रखर इनको इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है। और सच में ये एक जो चलन और ये जो भाव जिसमें कहते ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तिन तैसी, तो इनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव देखते हैं उन्होंने एक नया रूप दिया है। अगर हम ये कहें कि त्रेता युग में जैसे वानर सेना थी जी, त्रेता युग में जो कार्य वानर सेना ने किया, ठीक उसी तरह से ये इस युग की जो है ये श्रम सेना है, आपने निश्चित तौर पर कहा। और इस मंदिर के दुसाध्य मंदिर के निर्माण में जिस तरह से इन श्रमवीरों का योगदान रहा है उसको अलंकृत करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प गुच्छों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, और ये निश्चित तौर पर ये उनका जो एक भाव है ये अपने आप में बहुत ही प्रसन्न करने वाला, आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला, और निश्चित तौर पर ये जो श्रमिक हैं वो अपने आप को बहुत धन्य और महसूस कर रहे होंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक इंटरव्यू एक श्रमिक का देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो मुझे यहाँ से जो भी मुझे पैसा मिला है श्रम करने के बदले, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही मैं दान करके चला जाऊंगा, तो वो महादान है। एक श्रमिक जिसके जो पूरी कमाई की इस मंदिर के निर्माण के दौरान, वो समस्त कमाई, अपनी समस्त आय अगर राम मंदिर ट्रस्ट को दान कर देता है, मैं मानता हूँ कि वो सबसे महान दान है। और वो इन श्रमिकों ने करके दिखाया है, श्रमदान के माध्यम से भी और अपनी भावनाओं के माध्यम से।
जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये जो दृश्य हैं ये अभूतपूर्व है। ये दरअसल इसको कहा जाए कि ये दृश्य भी आंखों में बिठा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से राम की प्रतिमा जिन्होंने गढ़ी, दरअसल वो जो इस राम के पूरे मंदिर को साकार जिन्होंने किया, इस जन्मभूमि के मंदिर को कितने कम समय में, और कितना भव्य दिव्य मंदिर है, उस हिसाब से निश्चित तौर पर ये जो श्रमदेव हैं ये भी पूजनीय। मुझे लगता है कि पहले हम कभी नहीं देखते थे, भारत में और भी निर्माण हुए हैं, लेकिन इस तरह से श्रमवीरों का सम्मान करना ये बहुत अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। हमने हर जगह पे देखा, हमने प्रगति मैदान का जब निर्माण हुआ, भारत मंडपम बना, उसके श्रमिकों के साथ बातचीत की। काशी विश्वनाथ को भी हम देख लें, हम देखते हैं सफाई कर्मचारी जब जो थे उनके जिस तरह से चरण धोए थे प्रधानमंत्री ने, तो ये एक बहुत अच्छी अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। और ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा देती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, अन्यथा लोग जिस तरह से व्यवहार विचार रखते थे उसके उलट है। और अब ये भाव सामने आ रहा है। बिल्कुल, इनको विश्वकर्मा का रूप, विश्वकर्मा, ये असली विश्वकर्मा है, ये असली विश्वकर्मा इनको बताइए। ये देखिए, ये भव्य दिव्य मंदिर जो आंखों में समा लेने को जी चाहता है, दरअसल इन्हीं विश्वकर्मा ने, इन्हीं श्रमवीरों ने, इन्हीं श्रम देवताओं ने बनाया है। और निश्चित तौर पर उनके ऊपर अगर प्रधानमंत्री पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो ये उनकी बड़ा काम है, उदारता भी है। और सभी को मैं कहता हूँ कि इसको सभी को जो राजनीतिक नेतृत्व है और भी उनको भी इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे श्रमवीरों को पुष्प वर्षा करता है तो कितना आह्लादित महसूस करते हैं, कितना वो प्रेरित महसूस करते हैं, ये बात समझने की है। बहुत शानदार दृश्य हैं, मन को विह्वल करने वाले दृश्य हैं, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, अभी कुछ श्रमिकों से बातचीत भी की थी, हमारे डीडी न्यूज पर भी वो बातचीत दिखाई गई थी। कई श्रमिक ये कह रहे थे कि उनका मन इतना रम गया है यहाँ पे कार्य करते करते कि अब वो अयोध्या से जाना ही नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ अन्य कार्य वो करना शुरू कर दें। जी, तो ये जो असली राम भक्त है, ये नींव के पत्थर है। जब भी मंदिर बनता है हम कलश की तरफ देखते हैं, लेकिन वो नींव जिसने आज अपने भाषण के दौरान जिसके हाथों ने ये निर्माण किया, जिसके कर कमलों से निर्माण किया है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब जब इस मंदिर का जिक्र होगा, इसके निर्माण में लगे इन श्रमवीरों को भी हमेशा याद रखा जाएगा। जी, निश्चित तौर पर जब बात इन श्रमवीरों की होगी, इस मंदिर की होगी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक एक शिलालेख इसमें जो है, जो एक एक शिला है, दरअसल जो एक एक पत्थर है, वो इन्होंने इसको गढ़ा है, ये इसके शिल्पी हैं। बिल्कुल, अगर मैं कहूं तो ये आधुनिक युग के नलनील हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। और आप जो राम सेतु के निर्माण में जो वानर सेना लगी थी, तो नलनील ने जो जिस तरह से तैरते पत्थरों का पुल बनाया था, ये आधुनिक युग के नलनील हैं। प्रखर एक बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही कि जब कोई व्यक्ति अपने को छोटा समझता है कि मैं तो बड़ा असाधारण हूँ, मेरा क्या योगदान, तो गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये प्रसंग भी है। और जो आपने नलनील से तुलना की, वो भी निश्चित तौर पर इस बात की को प्रमाणित करती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन श्रमवीरों का, इन श्रम साध्य जीविकों का अभिनंदन किया है, वो अभूतपूर्व है। जी हाँ, बिल्कुल। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो मन में सवाल उठाता कि इतनी दूर तक, लंका तक ये राम सेतु कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। और ठीक उसी तरह से जब इस मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तो कैसे लोग सोचते थे कि इतनी जल्दी ये तैयार हो जाएगा। और इसको तैयार करके इन श्रमिकों ने करके दिखाया। दिन रात 24 घंटे काम यहाँ पर लगातार चलता रहा और उसका जो नतीजा है वो आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत नक्काशी है, कितना भव्य दिव्य विराट विशाल। धन की बात लोग करते हैं, लोग तमाम उस लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति का महत्व है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा, देखिए इसको बनाने में, इसको ये साकार रूप देने में, ये जीवंतता जो इसमें समाई हुई है, जो आकर्षण है, जो अद्वितीय ये एक जो मंदिर जो बनकर निखर कर सामने आया है, उसमें इन श्रमवीरों का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री ने उनको अभिनंदित करके ये साबित भी किया है। भव्य प्रभु का धाम, मिला व्याकुल मन को विश्राम। अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं प्रभु राम, अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं। तो जो बात मैं कह रहा था जटायु के संबंध में और भगवान श्री राम के पराक्रम के संबंध में, तो जब जटायु प्राण त्यागने लगे तो उन्होंने श्री राम ने उनसे कहा कि अगर आपसे निवेदन है कि आप जाएंगे तो हमारे पिता महाराज दशरथ से स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन इस घटना का वर्णन ना करिएगा, क्योंकि अगर मैं उनका असली पुत्र हूं तो रावण स्वयं अपने खानदान के समेत जाएगा और इस घटना का वर्णन करेगा।
तो ये राम के पराक्रम, उनके आत्मबल को भी दर्शाता है। ये जो पूरा संवाद है बहुत ही बेहतर तरीके से रामचरितमानस में दिया। ठीक है, अभी वो पीएम ने अपने भाषण में जटायु का जिक्र किया है, और पीएम ने अपने भाषण में क्या बड़ी बड़ी बातें कही हैं वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पीएम के भाषण की मुख्य बातें क्या थी। जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व त्याग आ चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मेरा कंठ अवरुद्ध है, मेरा शरीर स्पंदित है। बहुत प्रफुल्लित भी थे और भाव विभोर भी थे प्रधानमंत्री। और ये भी कहा कि वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्र है। जी, 22 जनवरी 2024 का ये सूरज अद्भुत आभा लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा ये तारीख नहीं, नए कालचक्र का उद्गम है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें आज कहीं 30 मिनट के करीब का भाषण था। उन्होंने कहा कि हमें सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। ये धैर्य का जिक्र करना बहुत जरूरी था कि 500 साल का धैर्य है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं दिव्य चेतनाओं को कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों तक प्रभु श्री राम का वियोग सहा है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय न्यायपालिका का आभार व्यक्त करूंगा जिसने न्याय की लाज रख ली। रामलला के मंदिर का निर्माण शांति और सद्भाव का प्रतीक है। बेहद बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने। कहा कि विजय के साथ विनय जरूरी है। राम मंदिर आग नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। लोगों ने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन यह आग नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम समस्या नहीं, राम समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामलला की जो प्रतिष्ठा है वो वसुदेव कुटुंबकम के विचार की प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यह मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा है। मोदी जी ने कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का आचार है, राम भारत का विचार है और राम भारत का विधान है। जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। ये भी कहा कि राम भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का प्रवाह है, भारत का प्रभाव भी है। जी, निश्चित तौर पर राम भारत की चेतना है, राम भारत का प्रवाह है, राम भारत की नीति है, राम भारत की नीति है, राम भारत का प्रवाह है और प्रवाह भी है। प्रधानमंत्री ने बहुत जिसको कहना चाहिए कि सधे हुए शब्दों में एक संकल्प भी ये व्यक्त किया और कहा कि निश्चित तौर पर ये समय जो है यही सही समय है और अब बदलाव का वक्त है। उसके लिए कठोर परिश्रम करने के लिए सब लोग जुट जाइए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। चलो मैं, अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। Nahyan, Honorable President of the United Arab Emirates and ruler of Abu Dhabi. His Excellency Mr. Jose Ramzorta, Honorable President Timor-Leste. His Excellency Mr. Philip Nyusi, Honorable President Mozambique. His Excellency Mr. Petra Fiala, Honorable Prime Minister, Czech Republic. And we welcome all the esteemed dignitaries. Thank you. નમસ્કાર, સુસ્વાગતમ. આપ સૌનું આજના આ વિશેષ અવસર પર ભાવભર્યું સ્વાગત છે. The banal event, Vibrant Gujarat Global Summit, has turned into a benchmark event globally, and its success can be attributed to various factors, including the state government's proactive policies, infrastructure development, and efforts to attract both domestic and international investors. Participating in this summit holds immense significance
as it marks the pioneering event in the Amrit Kal. On this occasion, we also welcome the Honorable Governor of Gujarat, Shri Acharya Devraj Ji, and Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Thank you. We shall commence the significant inaugural session with a patriotic song, Jai Jai Garvi Gujarat, which was written by famous Gujarati poet Shri Narmad. The song that highlights the rich heritage, culture, bravery, and achievements of the land of Gujarat will be sung by world-renowned Shri Kirtidan Gadvi. गुजरात नी स्वर्ण भूमि पर उग्यू स्वर्ण प्रभात। जय गुजरात जय गुजरात, ए जय जय हो गर्वी गुजरात तने वंदन, गुजरात तने वंदन, गुजरात तने वंदन। जय जय गर्वी गुजरात, दीपे अरुण प्रभात। जय जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात, दीपे अरुण प्रभात। जय जय गर्वी गुजरात, वंदन 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 वंदन, गुजरात तने वंदन, वंदन 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 वंदन, गुजरात तने वंदन। प्रकाश ने जड़ कसुंबी प्रेम शौर्य अंकी। तू भणव भणव निज संतति सौने प्रेम भक्ति नीरी। ऊंची तुझ सुंदर जा, जय जय गर्वी गुजरात। जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात, दीपे अरुण प्रभात। जय जय गर्वी गुजरात, वंदन 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 वंदन, गुजरात तने वंदन, वंदन वंदन, गुजरात तने वंदन। उत्तर मायंबा मात, पूरव मां काली मात। छे दक्षिण दिश मां करंत रक्षा कुंतेश्वर महादेव। ने सोमनाथ ने तारके ए पश्चिम के रादेव। छे सहाय मां साक्षात, जय जय गर्वी गुजरात। जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात, दीपे अरुण प्रभात। जय जय गर्वी गुजरात, वंदन 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 वंदन, गुजरात तने वंदन, वंदन 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 वंदन, गुजरात तने वंदन। नदी तापी नर्मदा जोय, महीने बीजी पण जोय। वળી જોઈ સુભટના સુધ રમણ ને રત્નાકર સાગર। પર્વત ઉપરથી વીર પૂર્વજો તે આશીષ જય કર। સંપે સોએ સૌજા, જય જય ગરવી
सरस रंग थसे सपने मां शुभ शकुन दिसे मध्यान शोभ से प्रीति गई चेरा जन घूमे नर्मदा सार जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भार जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भार जय जय गरवी गुजरात वंदन 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 गुजरात तने वंदन 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 गुजरात तने वंदन गुजरात तने वंदन गुजरात तने वंदन 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 Thank you very much, artists, for the melodious presentation. Over the past 20 years, the Vibrant Gujarat Summit has achieved remarkable success in its development and growth initiatives, thereby transforming Gujarat into an economic powerhouse. Let's have a look at an audio-visual film narrating the success story, that is, Vibrant Gujarat Global Summit. A land synonymous with prosperity and growth, warmth and hospitality, innovation and enterprise par excellence. Whose people are committed to the realization of the infinite potential of humankind. One earth, one family, one future. A state blessed with the guidance of a visionary who is pioneering India's ascent as a Vishwamitra, a universal friend. Welcome to the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit, distilled by 2 decades of exponential progress that catapulted the state as one of the world's most preferred investment destinations. Gujarat's GDP of $14 billion in 2002 grew to an estimated $282 billion in financial year 2022-23, nurtured by all-round excellence that catalyzed socio-economic growth with inclusivity and unbridled entrepreneurship, led India into Amrit Kaal. Envisioned in the face of adversity by the Honorable Prime Minister Narendra Modi at a time when he was the Chief Minister of Gujarat, the Vibrant Gujarat Global Summit bears on eloquent testimony to the characteristic resilience and the indomitable spirit of Gujarat. Inspired by Shri Modi's vision, the last 20 years have been an unparalleled saga of progress that has witnessed Vibrant Gujarat transform the state into India's growth engine. With unmatched state-of-the-art infrastructure,
unsurpassed manufacturing prowess and unparalleled growth. From farm to fintech. Drip irrigation to drones. New age technological advancements in semiconductors and electronics. From a vibrant startup ecosystem to flourishing e-commerce. From India's biggest hybrid energy park to the world's biggest diamond hub and office complex. Vibrant Gujarat Global Summit has elevated the esteem and stature of the state within the country and beyond. Gujarat is fully geared up to spearheading Industry 4.0, heralding the new industrial revolution with human augmentation frameworks and smart manufacturing propelled with the PM Gati Shakthi. The transformative approach for integrated and multimodal connectivity. See the world's tomorrow in the Gujarat of today, where Dholera Special Investment Region, a future-ready greenfield smart city, lays the foundation of modern regenerative economies. India's first bullet train is being built to usher in a dynamic ecosystem by fostering innovation and adaptability. Artificial intelligence, robotics and intelligent supply chain orchestration leverage symbiotic growth paradigm and a future-ready landscape with 80% of India's rooftop solar. To cutting-edge lab-grown diamonds, epitomize circular prosperity model for holistic sustainable development. It is gearing India's decade as a launchpad for technology and innovation, with new opportunities in semiconductors and electronics, unlocking infinite potential for startups and e-commerce with quantum-resilient infrastructure, shaping the future of fintech and continuing to foster medium, small and micro enterprises with a special focus on enhancing ease of doing business, empowering of women entrepreneurs, and creating eco-innovation hubs. Abuzz with green infrastructure integration, Gujarat's commitment to harmonious urbanization is transforming every harbour into a gateway of prosperity. It is transitioning to still greater heights in sustainability with vast spaces of renewable energy, an exciting hub for green energy including green hydrogen, electrolyzers, renewables and EV manufacturing. Gujarat strides forward towards mitigating carbon footprint as a beacon for clean solutions and net zero. पिछले 20 वर्षों से अगले 20 वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वाइब्रेंट गुजरात के 40 साल पूरे होंगे, यही समय है जब भारत को एक ऐसा रोड मैप बनाना होगा जो उसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हम उसको दुनिया के सामने प्रस्थापित करें। मुझे विश्वास है आप सभी भी इसी दिशा में जरूर सोचेंगे, जरूर कदम उठाएंगे, जरूर आगे आएंगे। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट विश्व के थॉट लीडर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स के लिए नॉलेज शेयरिंग का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। Welcome
to the Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Welcome to the gateway of a greener earth, richer life, smarter business. Welcome to Vibrant Gujarat 2024, the gateway to the future. Thank you. With the attributes like transparency, inclusivity, efficiency, empathy, and accountability, the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, has steered the state of Gujarat towards progress, ensuring equitable development in all the sectors. Under the prudent governance and pro-business policies of his government, Gujarat has made robust progress. We would like to welcome the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, for his address. विश्व नेता और भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान तथा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के प्रणेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रेसिडेंट यूएई, His Excellency Jose Ramos Horta, President Timor-Leste, His Excellency Philip Nyusi, President Republic of Mozambique, His Excellency Petra Fiala, Prime Minister Czech Republic, इस समिट के पार्टनर कंट्रीज के माननीय मिनिस्टर्स, विश्व के विविध देशों से पधारे एम्बेसडर्स, गुजरात के माननीय गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और गुजरात के मेरे सहयोगी मंत्री, मैं आप सभी को गुजरात की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है। आज यहां आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के खास बनाने वाले 34 पार्टनर कंट्रीज और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का 130 से अधिक देशों के डेलीगेट्स का भी मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कम्युनिटी के चेयरपर्सन, सीईओज तथा सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का भी गुजरात की धरती में स्वागत है। भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न हुई भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारतवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। आज गुजरात ने विश्व व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है। यह आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। आज हम सब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को सफल बनाने के विश्वास के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में कई चुनौतियों से घिरे गुजरात को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वाइब्रेंट समिट के माध्यम से
आशा की नई किरण दिखाई थी। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात जैसे ये विजनरी इवेंट का प्रारंभ करते हुए आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने कहा था, गुजरात कैन एंड गुजरातीज विल। आज यह समिट 2 दशक की असीम सफलता से पूरे विश्व के लिए नॉलेज शेयरिंग तथा नेटवर्किंग का सम्मानित मंच बन गया है। आज हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि आपकी प्रेरणा से ही गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट तथा देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। आदरणीय नरेंद्र भाई जी हर वाइब्रेंट समिट में गुजरात के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का विजन और नई पहलों की परिकल्पना हमें दी है। आप ही के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात ने इसे भली भांति साकार किया है। गुजरात आप ही के मार्गदर्शन में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। हम हमारी पॉलिसी के प्रति कमिटेड हैं। हम हर कमिटमेंट को ऑनर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में ग्लोबल फाइनेंस एक्टिविटी शुरू करने का विजन दिया और परिणाम स्वरूप उनके मार्गदर्शन में गिफ्ट सिटी आज वर्ल्ड की अनेक बड़ी फाइनेंशियल और फिनटेक कंपनियों का हब बन गया है। धौलेरा SIR, साणंद मंडल बेचराजी का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, मेडिकल डिवाइसेस तथा बल्क ड्रग पार्क, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब उत्पादन, इन स्पेस क्लस्टर, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अनेक उपलब्धियों और विकास के नए कीर्तिमान गुजरात ने वाइब्रेंट समिट की सफलता के फलस्वरूप हासिल किया है। इतना ही नहीं, गुजरात के इस मॉडल से प्रेरित होकर देश के अन्य राज्यों ने भी अपनी राज्यों के इवेंट में समिट के आयोजन शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप ही हमने 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखी है। यह समिट भारत के अमृत काल का पहला समिट है और यह प्रधानमंत्री जी की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, MSME और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस वाइब्रेंट समिट के उपलक्ष्य में हो रहे MOUs की 50% MOUs ग्रीन MOUs हैं। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने और पर्यावरण की रक्षा के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए ग्रीन ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ये MOUs दर्शाती है। आर्थिक विकास पर बल देने के साथ गुजरात सरकार ने हमेशा सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी ध्यान केंद्रित किया है। देश के इस अमृत काल में आयोजित हो रहा यह वाइब्रेंट समिट हमारे लिए अमृत भविष्य का रोड मैप तय करेगा। इस अमृत भविष्य के निर्माण में हमारा सहयोग देने इस वाइब्रेंट समिट में विश्व के अनेक राष्ट्र जुड़े हैं। आज की समिट में उद्घाटन अवसर के मुख्य अतिथि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रेसिडेंट UAE की उपस्थिति का मैं ऋण स्वीकार करता हूं। आपको कुछ अचानक संयोग के लेकर इस कार्यक्रम के बीच से ही जाने की ज़रूरत पड़ी है। हिज हाइनेस, आप अपना अति व्यस्त अमूल्य समय निकालकर इस समिट के मुख्य अतिथि रूप में उपस्थित रहे, आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि विकसित भारत 2047 को आपके विज़न को पूरा करने में गुजरात ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। फिर एक बार आप सभी महानुभावों का वाइब्रेंट गुजरात की वाइब्रेंट समिट में स्वागत है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। Thank you very much, Honorable Chief Minister, sir, for your welcome address. As mentioned by our Honorable Chief Minister, sir, our chief guest, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Honorable President of the United Arab Emirates and ruler of Abu Dhabi, has to leave
due to a pressing commitment, but before that, he has graciously agreed to say a few words. We welcome you, sir. Thank you. السلام عليكم. في البداية أشكر رئيس وزراء ولاية جوجرات على هذه الكلمة القيمة، كما أشكر صديقي وأخي العزيز رئيس الوزراء الهندي على دعوته الكريمة لحضور هذه القمة التي أسسها هو شخصيا عام 2003، وأصبحت منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار. وأهنيكم دولة الرئيس بمناسبة مرور 20 عام على هذه الانطلاقة. سيدي، نحن سعداء جدا بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبعث جميعا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا. كما أشكر المشاركين والمنظمين لهذه القمة، وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. شكرا. Thank you, Your Highness. We profusely thank him for his words of appreciation. It is indeed our honor and privilege to have him over here. Our Honorable Prime Minister will see him off and will join us back in few moments. But we shall continue the program. On this occasion, we have with us some eminent captains of industry. We would like to request them to address the gathering and share their insightful perspectives, enriching this prestigious summit with their profound knowledge and vision. We would like to invite Shri Lakshmi Mittal, Chairman, ArcelorMittal, for his address. नमस्कार। प्रधानमंत्री जी अभी हैं नहीं, शीघ्र ही आते होंगे, बट मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी एंड मेरे साथियों एंड ऑनरेबल डिग्निटरीज, पिछले साल सितंबर में वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं एनिवर्सरी पे मैं यहाँ आया था और प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे आइडियाज़, इमेजिनेशन और प्रोसेस कंटिन्यूटी के आधार पर इस मेगा ग्लोबल इवेंट को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ये बताया कि कैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की सच्ची भावनाओं को लेकर भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी और हर इंटरनेशनल फोरम में पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी मजबूत किया है। माननीय मुख्यमंत्री भाई पटेल जी
मैं आपको भी डेवलपमेंट को आगे रखने और इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने और एडमिनिस्ट्रेशन को स्तर ऊंचा उठाने के लिए बधाई देता हूं। गुजरात में फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस की एक पहचान रही है और जिसमें मेरी कंपनी ने भी अनुभव किया है। स्टील किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भरता में एक बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, रिन्यूएबल सेक्टर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, रेलवेज आदि में बहुत उपयोग होता है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम रूप से लाकर हम हाई एंड प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं जो एसएमई से स्टार्टअप तक के स्टील कंज्यूमर्स को कम्पिटिटिव बनाने में मदद कर रहा है। गुजरात ने आज से 4 साल पहले आर्सलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया का स्वागत किया था और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने हमारे हजीरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की भूमि पूजन की थी। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ रहा है और लक्ष्य के अनुसार इसका फेज़ 1 2026 में पूरा हो जाएगा। आज वाइब्रेंट गुजरात 2024 के इस मौके पर हमने सेकंड फेज़ के लिए MOU साइन किए हैं। जब ये प्रोजेक्ट 2029 में पूरा होगा तो 24 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन की क्षमता के साथ आर्सलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया का हजीरा साइट विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में से एक बन जाएगा। हमें पूरा भरोसा है कि गुजरात सरकार के सहयोग के साथ हम इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में पूरा करने में सफल होंगे। हम केवल स्टील में ही नहीं है बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में भी निवेश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देश के लिए अगला 20 साल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के 2047 के विजन को पूरा करने के लिए हम रेडी हैं। मैं इन सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब, इन सब लोगों को मेरे को मंच पे आने के लिए मौका देने के लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। सर, आपके महत्वपूर्ण संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We would now like to invite Mr. Toshihiro Suzuki, President, Suzuki Motor Corporation, Japan, to please deliver his address. Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and all senior guests, good morning and namaskar. I'm Toshihiro Suzuki from Suzuki Motor Corporation, Japan. I'm much honored to be invited to this ceremony. In the past 10 years, under the strong leadership and constant support of Honorable Prime Minister Mr. Modi for manufacturing industries, Indian automobile market has been expanding steadily. As a result, India has become a third largest automobile market in the world. We, Suzuki, have also scaled up production capacity substantially in India. It's noteworthy that as compared to 10 years ago, we expect
1.7 times in vehicle production and 2.6 times in export sales in the current fiscal year. Thanks to Prime Minister Mr. Modi's progressive approach and India's growth, we will invest in the future also. Firstly, the first battery electric vehicle from Suzuki Group will be rolled out from Suzuki Motor Gujarat by the end of this year. We plan to sell this model not only in India, but also export to Japan and European countries. Secondly, to expand our VEV production in future, Suzuki Group will invest 3,200 crore rupees in Suzuki Motor Gujarat to add a new fourth production line, which can produce 2.5 lakh units per year. This will increase the annual production capacity of Suzuki Motor Gujarat from the current 7.5 lakh to 1 million units. Thirdly, we will invest 35,000 crore rupees for the construction of a second car plant in Gujarat, which would produce another 1 million units per year. As a result, the annual production capacity in Gujarat will be 2 million units, namely 1 million units at SMG and 1 million units at a second new plant. Finally, as far as reduction of greenhouse gas emission is concerned, our effort will be through a multi-pathway approach. That means, in addition to vehicle electrification, we will offer multiple options, such as compressed natural gas, biogas, bioethanol, and green hydrogen. Taking advantage of India's animal wealth, we will start production of biogas from cow dung. Together with National Dairy Development Board and Balance Dairy, Suzuki has already started construction of 4 biogas plants in Gujarat. Suzuki Group will always work to provide a variety of sustainable customer-oriented mobility options. Thank you for your kind attention. Thank you very much, sir. We would like to invite Shri Mukesh Ambani, Chairman, Reliance Industries Limited. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai, Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai Patel ji, distinguished guests and dignitaries from all over the world, ladies and gentlemen. Welcome to Gujarat and the 10th Vibrant Gujarat Summit, the most prestigious investor summit in the world today. No other summit of this kind has continued
for 20 long years and going from strength to strength. This is a tribute to our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi's vision and consistency. I have been one of the fortunate few to have participated in every single edition of Vibrant Gujarat. I have come from the city of the gateway of India to the gateway of modern India's growth, Gujarat. I am a proud Gujarati. Mane Gujarati hovanu abhiman છે. When foreigners think of New India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. About Narendra Bhai, when you speak, the whole world not only listens, but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of slogan that millions of Indians are chanting, that Modi hai to mumkin hai. I tell them, most respected Shri Narendra Bhai Modi ji, when you speak, the whole world not only listens, but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan, millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination, and execution. They agree, and they also say, Modi hai to mumkin hai. My esteemed friends, I will never forget what my father, Dhirubhai Ambani, used to tell me in my childhood. Gujarat is your Matrubhumi, and Gujarat should always remain your Karm Bhumi. Today, let me declare yet again, Reliance was, is, and will always remain a Gujarati company. Each of Reliance's business is striving to fulfill the dreams of my 7 crore fellow Gujaratis. Reliance has invested over $150 billion, that is 12 lakh crores, in creating world-class assets and capacities across India in the last 10 years. Of this, more than 1/3 has been invested in Gujarat alone. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, today I would like to make 5 commitments to the people of Gujarat. First, Reliance will continue to play a leading role in Gujarat's growth story with significant investments in the next 10 years. Specifically, Reliance will contribute to making Gujarat a global leader in green growth. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. For this, we have started building the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, over 5,000 acres in Jamnagar.
This will generate a large number of green jobs and enable production of green products and materials, and will make Gujarat a leading exporter of green products. And we are ready to commission this in the second half of 2024 itself. Second, Reliance Jio completed the fastest rollout of 5G infrastructure anywhere in the world. Today, Gujarat is fully 5G enabled, something that most of the world does not yet have. This will make Gujarat a global leader in digital data platforms and AI adoption. 5G enabled AI revolution will make Gujarat's economy more productive, more efficient, and more globally competitive. Besides generating millions of new employment opportunities, it will produce AI-enabled doctors, AI-enabled teachers, and AI-enabled farming, which will revolutionize healthcare, education, and agricultural productivity in the state of Gujarat. This will benefit every Gujarati in urban as well as rural areas, since to my mind, AI also means an all-inclusive growth. Third, Reliance Retail will further accelerate its mission to bring quality products to consumers and simultaneously empower lakhs of kisans and small merchants. Our retail business improves the quality of life of all households of Gujarat with better products and services. Fourth, Reliance will make Gujarat a pioneer in new materials and the circular economy. As a first step, Reliance is setting up India's first and world-class carbon fiber facility at Hazira. And finally, fifth, Prime Minister Modi ji has announced that India will bid for 2036 Olympics. In preparation for that, Reliance and Reliance Foundation will join forces with several other partners in Gujarat to improve education, sports, and skills infrastructure that will nurture the champions of tomorrow in various Olympic sports. Most respected Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, before I conclude, permit me to articulate a conviction that resides in the heart of everyone in this hall and most Indians. As Chief Minister of Gujarat, you used to say, Bharat ke vikas ke liye Gujarat ka vikas. And that is how you made Gujarat India's growth engine. Now, as Prime Minister of India, your mission is Dunya ke vikas ke liye Bharat ka vikas. You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. The story of your journey from Gujarat to the global stage in just 2 decades is nothing short of a modern epic. Today, and in today's India, is the best time for young people to enter the economy, to innovate, and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. The coming generations will indeed be thankful to Prime Minister Modi for being both a nationalist and an internationalist. You have laid a solid foundation for Viksit Bharat, India as a fully developed nation in Amrit Kal. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. And as I see, Gujarat alone will become a $3 trillion economy. Therefore, I am confident, every Gujarati is confident, and every Indian is confident that the Modi era will take India to new summits of prosperity, progress, and glory. Thank you very much, sir. Jai Gujarat, Jai Jai Garvi Gujarat, Jai Hind. Thank you very much, sir. We would now like to invite Mr. Sanjay Mehrotra,
CEO, Micron Technologies USA, to deliver his address. Namaste and good morning. I would like to open by thanking Prime Minister Modi ji. Your vision to make India a global hub for semiconductors will be a huge economic driver for India's future as India marches toward becoming the third largest global economy. I would also like to recognize the several industry leaders who are going to be speaking here today and have already spoken. It truly is an honor for me to share this stage with you to open this critical forum discussing opportunities for India to accelerate domestic manufacturing as India marches towards a very bright future. There is a tremendous opportunity ahead for India in semiconductors. Vibrant Gujarat will also address the visionary ideas that are critical for India's growth as a semiconductor power. Today, I'm proud to represent Micron. Micron is one of the world's largest semiconductor companies and the leader in memory and storage. Micron's innovations have been at the heart of all computing systems for more than 4 decades. Memory is a key enabler of AI, and Micron is a leading powerhouse in memory. I'm proud that in June, we announced plans to build a world-class memory assembly and test facility right here in Gujarat, the first of its kind in India. I'm grateful to the Indian government and all the officials with the great support from Bhupendra Bhai ji and the central government and the state government, all that have been involved in making this investment possible. We have begun phased construction and proud to partner with Tata projects to build this world-class facility. In fact, I visited this facility just yesterday, and the construction is coming along very nicely. The first phase, 500,000 square feet of planned clean room space, will be operational by early 2025. Hiring has already begun, and we estimate that this project will create 5,000 new direct jobs for Micron here in Sanand, Gujarat, and will also create an additional 15,000 community jobs over the coming years. The combined investment by Micron and the government over the course of both phases could reach up to $2.75 billion US. Government support will help fund the project and facilitate access to essential semiconductor infrastructure and resources, which will drive innovation and enhance local talent development. We see our investment helping initiate a cluster of semiconductor investment, building momentum that will benefit India's manufacturing goals. We are hopeful that our investment will help catalyze other investments in the sector, strengthen India's manufacturing capability, drive innovation, and support broader job creation. In fact, I'm pleased that my good friend Jeffrey Chen, who's going to be speaking here soon, of Simtech, is considering bringing his substrate manufacturing capabilities here to Gujarat in support of Micron's plant here. This is an example of the ecosystem, the cluster that Micron is capable of generating as an anchor semiconductor company here in Gujarat, here in India. We are proud to partner with India to bring advanced semiconductor memory assembly and a greater technology manufacturing ecosystem to Gujarat. Together, we are building the future of technology manufacturing.
not just for Micron, not just for Gujarat, not just for India, but for the world. Thank you. Thank you very much, sir. We would now like to invite Shri Gautam Adani, Chairman, Adani Group. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, distinguished heads of government of our partner countries, His Excellency Governor of Gujarat, Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel, distinguished ministers, captains of industries, and my dear friends. Good morning. It is a privilege to address the 10th Vibrant Gujarat Summit. I take immense pride in having been a part of every one of these summits. Honorable Prime Minister, Vibrant Gujarat is a stunning manifestation of your extraordinary vision. It has all your hallmark signatures, merging grand ambition, massive scale, meticulous governance, and a flawless executions. It ignited a nationwide movement as all our states march forward, competing and cooperating to fundamentally remodel India's industrial landscape. The statistics of the past decade are remarkable. Since 2014, India's GDP has grown by 185% and per capita income by a stunning 165%. This achievement is unparalleled, especially considering this decade's geopolitical conflicts and a pandemic challenges. Honorable Prime Minister, your achievements on the international stage are equally remarkable. You have taken us from a country seeking a voice on a global platforms to a nation that now creates the global platforms. The Solar Alliance platform, an initiative you conceptualized, and your leadership at the G20 platform set a benchmark for a more inclusive world order. Adding the Global South to the G20 is a defining moment in our modern history. Honorable Prime Minister, you don't just predict the future, you shape it. You have reoriented India to become the world's fastest growing nation and position her as the global social champion driven by the two philosophies of Vasudhaiva Kutumbakam and a Vishwaguru. And the best is yet to come. With your foresight in harnessing India's youth to build a Viksit Bharat and make India a fully developed nation by 2047, you have ensured that the India of today is poised to shape the global future of tomorrow. Honorable Chief Minister, at the previous summit, I announced our investment of over rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crore across the various sectors I had promised, and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs.
Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer. Even visible is from space. We are expanding the green supply chain for an Atmanirbhar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. This includes solar panels, wind turbines, hydrogen electrolyzers, green ammonia, PVC, and expansion in copper and cement projects. Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat, thereby creating over 100,000 direct and indirect jobs. I am grateful for your support. It is my commitment that I will do my part to contribute to a Viksit Gujarat. Thank you. Jai Jai Garvi Gujarat. Jai Hind. Thank you very much, sir. We would now like to invite Mr. Jeffrey Chun, Global CEO, Simtech, South Korea. Good morning. Thank you, Honorable Prime Minister, Head of State, Government, Union and State Ministers, senior officials of Government of India, and the State Government of Gujarat for hosting Vibrant Gujarat Global Summit 2024. It is my great honor to participate in this event and given the opportunity to interact with global and national industry leaders and other distinguished guests. As a supply chain partner for the semiconductor assembly and test industry, we, Simtech, provide the best-in-class semiconductor packaging, IC substrates, and high-density interconnect printed circuit boards to our industry-leading customers. We are very excited to share our own angle to the India project as a co-location investment. Following our major customer, Micron's project in the state of Gujarat. I would like to emphasize that this is not our first time supporting our key customers' supply chain network with co-location investment. We have already done our project with Micron in China more than 10 years ago. We have recently executed another project in Malaysia together. Through these projects, we have proven to the market that co-location investment really boosted the growth of a semiconductor ecosystem in the region, and that it also helped our business to settle in the initial stage of the investment, which would not have been possible without the support of the next-door neighbor like Micron. Vibrant Gujarat Global Summit 2024 showcases the global movement of creating a new supply chain network in a fast-growing nation like India. And Simtech, as a company from Korea, is very proud to be part of this movement to achieve a new milestone, making a prosperous Gujarat for self-reliant India supply chain. We are now preparing for another round of co-location investment in India, following Micron's investment plan in Gujarat state. And I'm very pleased to share the progress with the audience today that with the support from the central and state government,
we are ready to make an investment, a significant investment in India and create thousands of job opportunities for high-skilled talents in the state of Gujarat together with Micron. And most of all, elevating the India's PCB and IC packaging substrate industry to another level to make India's presence in the semiconductor supply chain network much stronger. We really look forward to further supporting our customers' supply chain, both in India and globally. And we will further enable India's domestic players to be part of the global supply chain ecosystem. Thank you very much. Thank you very much, sir. We now invite Shri N. Chandrasekharan, Chairman, Tata Sons Limited, for his address. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Governor of Gujarat, distinguished heads of states, ministers, ladies and gentlemen. It's truly a great privilege and honor to attend and share a few thoughts on the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit. The steady and spectacular progress of Gujarat consistently over such a long period of time clearly demonstrates the visionary leadership and the mindset of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you, sir, for your leadership to Gujarat and to the whole country and to all of us. The impact of economic development has also resulted in tremendous social development. Gujarat clearly has established itself as the gateway to the future. For the Tata Group, Gujarat is a very special place. The Tata Group's origins started in Navsari, the birthplace of our founder Jamshedji Tata. The Tata Group started its presence here in 1939 with Tata Chemicals, 85 years ago. Today, 21 of our Tata Group companies have a very strong presence, from Tata Power, Tata Motors, Tata Consultancy, our defense company Advanced Systems, Hotel, Tata Steel, and all our retail companies, and Air India, and many other companies. The group employs over 50,000 people in the state of Gujarat. Recently, we have made significant commitments to expand our presence in the state of Gujarat. Sanand is becoming home for all our electric vehicles technology. We expanded the footprint in Sanand with additional capacity so that we can meet the growing demands of the electric vehicles. We concluded and are about to launch the building of a huge gigafactory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sanand. The project should start construction in the next couple of months. Then we also are building the C-295 defense aircrafts, initially in Vadodara and then in Dholera, and that work is going on full swing. The Tata Group has also made a commitment and is on the verge of concluding and announcing a huge semiconductor fab
in Dholera. And we are about to complete these negotiations and start in 2024. In addition to that, the Tata Group is also building, in partnership with the Government of India and Gujarat government, an Indian Institute of Skills Institute, which will be constructed over 3.2 lakh square feet and should be fully operational and will train more than 25,000 professionals every year, primarily in advanced manufacturing, electric vehicles, advanced electronics, and then hospitality. And the project's first phase will be launched in March 2024. In all, we see Gujarat as a very, very important destination, not only for business growth, but for the future advanced technology industries that India is looking to grow at. With all this, Gujarat is one of the most important destinations for the Tata Group, and we hope to play a very important role in the future of the economic development of this state. Thank you once again, Honorable Chief Minister, for inviting me, and thank you, Prime Minister, for your leadership. Thank you very much, sir. We now invite Mr. Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman, DP World, UAE, for his address. Honorable Minister Shri Narendra Modi, Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Patel, dignitaries of Government of India, UAE, and partner countries. Distinguished guests, good morning. It's a great honor and a privilege to address the inaugural session of the 10th edition of the Vibrant Gujarat Global Summit. It is heartening to see Honorable Prime Minister Modi's vision of Vibrant Gujarat became a reality. I would like to congratulate and thank the Government of Gujarat, led by Honorable Chief Minister Bhupendra Patel, for organizing this summit and inviting me. The 10th edition of the Vibrant Gujarat Summit truly showcases its exponential rise as India's premier business forum, guiding the nation to Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat 2047. Gujarat also have been a pioneer in developing and promoting various industrial clusters and estates, such as the Gujarat International Finance Tech City, the Dholera Special Investment Region, and the Gujarat Maritime Cluster, truly acting as the gateway to the future. Gujarat has a special place within the strong bilateral ties between UAE and India. The UAE is one of the biggest overseas investors in Gujarat, having invested more than $2.4 billion since 2017. And these strong connections have seen Gujarat export more than $7 billion worth of goods to UAE in the last year. India was the fastest growing major economy in the world in 2023. This growth is set to continue under the strong leadership of Honorable Prime Minister Modi and Honorable Chief Minister Patel. Through investment and initiative like WatchShakthi, Gujarat and India will continue to realize their potential economic powerhouses. Like the Vibrant Gujarat Summit, DP World also started our operation in Gujarat in 2003.
with the opening of the Mundra International Container Terminal. Since 2003, DP World have invested in the state of Gujarat as well in other states in India in the tune of $2.5 billion to develop multimodal logistics, ecosystem connection ports to free trade zone, container freight station, inland rail terminal, contract logistic, cold chain, and express cargo services. DP World is planning in the next 3 years to invest, in addition to that, $3 billion. We will continue to support Gujarat economy by building state-of-the-art container terminal at Kandla with a capacity of 2 million containers. Looking ahead, we foresee deeper trade, employment, and cultural collaboration between India and UAE. DP World has signed strategic memorandum of understanding with the government of Gujarat on the sideline of the summit, which reiterates our commitment to the state of Gujarat and India. We are proud to partner with the government for the development of India's logistics sector, and we will continue to support the manufacturing industries of Gujarat and the rest of India to make India goods globally competitive and accessible. I am grateful to the government of Gujarat and to the organizer for inviting me to this summit, and I am certain that the 10th edition of Vibrant Gujarat will set new benchmarks for success for years to come. Thank you very much. Thank you very much, sir. We now invite Mr. Shankar Trivedi, Senior Vice President, NVIDIA Global Field Operations, for his address. Namaste. Good morning, Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai Patel ji, distinguished heads of state and leaders of government, and captains of industry, ladies and gentlemen, ane bhaiyo ane behno. It's such a pleasure and honor to be part of so many giant captains of industry here as a humble Ahmedabadi boy who started many years ago, went to IIT Delhi, and now I have the privilege of representing NVIDIA at this summit. Generative AI is going to change the way we work, the way we do business, the way we govern, the way we live. Just like the internet starting 30 years ago and the mobile revolution starting 25 years ago, the generative AI revolution will also do the same. Generative AI is going to affect all of you. More than 5 years ago, Prime Minister Narendra Bhai Modi ji invited my CEO Jensen Huang to deliver a lecture to all of the heads of Indian governments in the Vigyan Bhavan. It is the first time that a global leader actually talked about implementing of AI. Thanks to the leadership of Prime Minister Modi ji, it has been a catalyst to accelerate the adoption of generative AI in India and also here in Gujarat. Today, I want to give you 3 specific things that NVIDIA has actioned over the last few months. Number 1, skills development. We have created digital content that can be delivered online and in person to hundreds of thousands of students, developers, researchers, and technical institutions. We are already rolling out this curriculum content on generative AI to all of our business partners here in India, especially the global systems integrators. We are now most willing and keen and eager
to partner with universities and technical institutions here in Gujarat and elsewhere in India to deliver this compelling content to the hundreds and thousands of developers in India. India has scale, India has talent, India has amazing data, India has a unique culture. Sovereign generative AI requires scalable AI data center infrastructure, hardware and software, in order to be successful. So secondly, I'm delighted to tell you that we are partnering with all of India's leading business groups, the Tatas, Reliance Group, and many others, to set up state-of-the-art AI data center facilities and provision them here in India. Specifically today, I'm very happy to inform you that our partner Ayodhya is setting up a state-of-the-art AI data center here in Gift City, and it will be available and go live before the end of March. Thank you, sir. And thirdly, we are very strong supporters of Make in India. Make in India for India and Make in India for the world. Our partners such as NetWeb and others, Eviden, Atos, are actually already making state-of-the-art AI hardware for consumption here in India and elsewhere in the world. And we are working strongly with partners both in the upstream semiconductor and ecosystems such as Sanjay and his company at Micron and other semiconductor ecosystem partners, as well as downstream partners such as our system OEMs, our ODMs, our contract manufacturers, and other data center providers to establish a very strong AI electronics ecosystem in India, which can service not just here in India and Gujarat, but also the global economy. Thank you again, sir, and it's a pleasure and privilege to be here. Jai Hind, Jai Garvi Gujarat, and of course, God bless America too. Thank you. Thank you very much, sir. We now invite Mr. Nikhil Kamath, co-founder and CFO, Zerodha. I only have 3 minutes today, so I won't waste too much time by talking about me or setting context. Picture a 17-year-old boy, a school dropout in Bangalore from 20 years ago, not particularly smart, not too educated, and no capital at hand. Bangalore from 20 years ago was a lot quieter, greener, without the vibrance that one might associate with Bangalore today. The fact that I'm able to stand here today in front of all of you, people I have idolized for so long, that opportunity to me has been incredible, and that to me is the India story. I often hear people talking about what India could be 10 years from now, what needs to change, or the fact that we will arrive in 10 years, in 5 years, or a certain period of time from today. I think we are standing too close to the trees and not seeing the forest, because the India I am in today, that is the India that, to me, has already arrived. The opportunities the country threw to a 17-year-old boy, again with no education, no capital, or exceptionally smart, this, in my view, has not happened forever. The last 10 years have been incredible, and I'm not the only exception here in India.
There are many other exceptions like me. We all hang out. We call this the startup ecosystem of India. The big change in India from the last decade, in my opinion, also has been that entrepreneurship has moved from something that we have all watched around us, heard in movies, or thought could happen, something that we aspire to entrepreneurship today, which is something that we all are actively trying. You could take an example of this being a housewife watching Shark Tank, a small-time shoe salesman selling online on Flipkart. These are not stories that existed 10 years ago. To that one man in the audience here today, who in my opinion has facilitated this stable ecosystem for people like me to thrive, and millions of other who we call the youth of India to thrive, I would like to say thank you, Modi ji, for having created this ecosystem for all of us. Growing up, I used to talk to people, that one relative in my family who went abroad, studied, and did very well. Traveling to the West seemed to be the best thing that could happen to anybody. Today, when I talk to Indians in the West who have done very well, the only thing I hear from them, it's a very young word, I call it FOMO, the fear of missing out. They're talking about India as the story that they fear missing out today. That change which has happened in the last 10 years is so evident to see that it makes me feel proud. It makes me feel like I'm in the right place at the right time, and that place today is India. I often ask people if their life was a book, what would they call the current chapter? It's a good question for all of us to ask ourselves. When I look at India and I ask myself, what would be this chapter in the book of India? The first word that came up in my mind was arrived. And finally, as I stand here in a room full of politicians, diplomats, dignitaries, mentors, I don't look upon this ecosystem as potential, as the way I'm looking at this today is we're all potential partners in a story that could change the global economic landscape today, and that story is India. And to all the foreign investors here, India is seemingly looking like the coolest party in town. I think what you need to be aware of is if you arrive too late, you might not get in. So I'd like to thank everybody, thank Modi ji for this opportunity. Thank you, everyone. Thank you very much, sir. Today we have with us dignitaries from a number of countries. We would like to invite them to share their thoughts with us today. We would like to invite His Excellency, Mr. Shin Hosaka, Vice Minister for International Affairs, Japan. Namaskar. Good morning. Honorable Prime Minister Narendra Modi, Honorable Chief Minister of Gujarat, Pendra Patel, distinguished guests, all the delegates in attendance, my name is Shin Hosaka, Vice Minister for International Affairs of the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, or METI for short. First of all, on behalf of the Japanese government, I'd like to express our gratitude to Prime Minister Modi for the letter to our Prime Minister Kishida expressing his condolences regarding the large earthquake
January 1st in the Noto region in Japan. Thank you very much. Well, thank you for graciously inviting me to Vibrant Gujarat 2024. It's a great honor to have a speech in this Sunday event. With the world facing multiple crises that include natural disasters, climate change, and geopolitical tensions, firm international cooperation for addressing challenges on a global scale is taking on greater importance. I wish to express my admiration for the formidable leadership of Prime Minister Modi, who, despite such difficult circumstances, has successfully upheld India's great responsibility of the G20 presidency and continues to tackle the promotion of economic cooperation among the global South nations and the resolution of other challenges on a worldwide scale. India and Japan are special strategic global partners bound by the universal values of freedom, democracy, human rights, and rule of law that we have shared over our long history of exchange. Being that we are at such global turning point, I firmly feel that more than ever, the strengthening of relations between India and Japan in the economic sector is imperative for the sake of carving out a sustainable, peaceful future. Up to this point, Japanese corporations have continued to invest in the nation of India, with a cumulative amount of investment between 2000 and 2023 reaching $38.3 billion. This amount is second in the world when tax havens are excluded. The number of Japanese corporations that have entered into the Indian market and the number of their bases of operations they have respectively reached 1,400 and 4,800. Over time, these corporations have kept on contributing to the further development of India's manufacturing sector, particularly the automotive field. In the state of Gujarat, a manufacturing industry ecosystem centered on the 4- and 2-wheeled vehicle sectors have been intensively built there. In order to further accelerate the Make in India initiative, Japan will further tackle the improvement of the investment environment through support for Japanese industrial parks. Gujarat currently hosts 6 Japanese-style manufacturing schools where we develop human resources to work on the manufacturing front lines. We intend to continue lending our cooperation in this field going forward. Initiatives by Japanese corporations are also extremely active. To give an example, Suzuki has already produced 750,000 vehicles at its Gujarat-based factory that it sells all over the world, not just in India. Moreover, the company has also adopted a plan to export electric vehicles produced in Gujarat to Japan and Europe in 2025 and beyond. I feel deep gratitude toward the Indian Gujarat governments for their cooperation for so long. Last July, we announced the Japan-India Industrial Co-Creation Initiatives in order to go beyond cooperation in the automotive industry and other existing industry domains to create industries in the name of further developing relations between our respective nations as we move forward. In the semiconductor, hydrogen green, and digital domains in particular, METE is carrying out preparation to proactively assist with business development in India. For cooperation surrounding semiconductors, in July 2023,
we executed the Japan-India Semiconductor Supply Chain Partnership and launched a policy dialogue. Last November, we promptly held our first meeting of that partnership, which had over 100 individuals representing Japanese semiconductor-related enterprises in attendance. This time, as well, we carefully selected some semiconductor corporations with considerable potential to contribute to India and asked them to accompany us here. We hope to go beyond contribution to the establishment of semiconductor ecosystem in India in the form of developing semiconductor manufacturing environment, improving the logistic environment, and developing semiconductor human capital. For the hydrogen domains as well, we are providing support for attracting Japanese cooperation to India and lowering the initial risk associated with the start of operations in order to accelerate cooperation with the nation. In fact, world-leading equipment such as water electricity systems and ammonia mixed combustion burners is in the process of being introduced in India. In addition, METI will enact budgetary measures of $200 million for the purpose of accelerating economic cooperation with India. Our hope is to develop concrete projects through these funds towards the future. The concept of Vibrant Gujarat 2024 is gateway to the future. Let Japan, with its accumulation of technology, and India, whose growth is just beginning, join hands in driving forward international society and carving out the future of the world. I will close my speech with the pledge of cooperation as a representative of Japan, India's best friend. Thank you for being such an attentive audience. Thank you very much. Thank you very much, sir. We now invite His Excellency Mr. Ibrahim Yusuf Al Mubarak, Assistant Minister of Investment, Kingdom of Saudi Arabia, for his address. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، معالي رئيس الوزراء باتيل، رئيس وزراء ولاية جوجرات، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نامستي. يشرفني الانضمام إليكم هنا في ولاية جوجرات، والتي تجمع اليوم قادة حكومات وقطاع الأعمال والاستثمار من جميع أنحاء العالم، وأنقل لكم تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى حكومة الهند بقيادة دولة الرئيس مودي، لاستضافتها لهذه النسخة العاشرة من قمة جوجرات العالمية النابضة بالحياة. اسمحوا لنا بداية أن نشيد برحلة الهند الاقتصادية المبهرة، والتي وصلت بالهند إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث الاقتصاد والاستثمار الأجنبي المباشر. كما نهنئكم على رئاستكم الناجحة لمجموعة ال20 كصوت للاقتصادات الناشئة، وهو مما يهمنا بالتأكيد كعضو في مجموعة ال20، إضافة إلى أننا نفخر بانضمامنا إلى البريكس في هذا العام. منذ أن انطلقت رؤية المملكة 2030 قبل ما يقارب 8 سنوات، ارتفع ناتجنا المحلي بنسبة 66%، وتضاعف استثمارنا الأجنبي المباشر 4 مرات، ونحن على بعد نقطة واحدة فقط من هدفنا المتمثل أن تصبح المملكة العربية السعودية
أحد أكبر 15 اقتصاداً في العالم بنهاية هذا العقد بإذن الله. إن مكانة المملكة كشريك استثماري في البنى التحتية التقليدية والطاقة في القرن العشرين تتجاوز ذلك، لتشمل القطاعات الصناعية والخدمية في القرن الحادي والعشرين، مثل السياحة والثقافة والنقل والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات والمدن والمصانع الذكية، بالإضافة إلى البناء والنفط والغاز. إضافة إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تجاوزت 700 مليار ريال، كما يحتل سوق الأسهم في المملكة المرتبة التاسعة عالمياً، بعد أن صعد من المرتبة 25 في عام 2016، وقد بلغت الشركات المدرجة في السوق السعودي أكثر من 200 شركة، ويشاركنا اليوم مجموعة من هذه الشركات. إن مشاريع المملكة تعد فريدة من نوعها من حيث النطاق والطموح، لأنها تمثل بعضا من أكبر المشاريع المستقلة على مستوى العالم، وتوفر للمستثمرين فرصة استثنائية لإعادة تعريف الصناعات والحصول على حصة في السوق، ومنها نيوم، مشروع البحر الأحمر، القدية والعلا، ومشروع بوابة الدرعية وغيرها من المشاريع. وخلال هذه القمة ستتاح لكم الفرصة لمعرفة المزيد مباشرة من الأشخاص الذين صمموا هذه المشاريع وقادوها منذ البدايات. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكريم، إن المملكة العربية السعودية لا تشترك مع الهند في المصالح الاستراتيجية فحسب، بل تشتركان أيضاً في طموحات مماثلة تشمل التحول الرقمي والابتكار والدفاع والفضاء. كما تفخر المملكة بكونها جزءاً من الاتفاقية التاريخية والتي تم الإعلان عنها على هامش قمة مجموعة العشرين المثمرة التي عقدتها الهند في سبتمبر الماضي، وهي اتفاقية إنشاء ممر اقتصادي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا بالسكك الحديدية وخطوط الموانئ وخطوط الأنابيب، كذلك مثل كابلات البيانات والهيدروجين والكهرباء، مما سيعزز بإذن الله سلاسل الإمداد والتوريد في جميع أنحاء العالم، مع خلق فرص استثمارية غير مسبوقة في المملكة والهند والدول الشريكة الأخرى. في الختام أشكر مضيفين الكرام جميعاً على استضافتنا، ونسأل الله لهذه القمة التوفيق والنجاح، وأشكركم جميعاً على اهتمامكم وحسن الاستماع. شكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, sir. We now invite Lord Tariq Ahmed, Minister of State, Middle East, North Africa, South Asia, United Nations and the Commonwealth, UK, for his address. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Chief Minister, President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and keeping with the tradition, I too can use the phrase, bhaiyo aur behno. ब्रितानी सरकार की तरफ से भारतीय सरकार को नमस्कार और बहुत-बहुत बधाई हो। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ब्रितानी का सरकार का नुमाइंदा एक ऐसा इंसान है जिसका हिंदुस्तान से एक गहरा ताल्लुक है। Prime Minister Modi ji, you defined the living bridge between our United Kingdom and India. And therefore it is appropriate that I also extend the greetings of my Prime Minister, Rishi Sunak, indeed the son-in-law of Bharat, the son-in-law of India. And on this occasion of the 10th Vibrant Gujarat, it's my honor to represent the British government on this auspicious occasion.
This summit has truly, in every sense, served as a masterclass on how to go about attracting global investors, to have a stake in that remarkable growth, which, as we've seen captains of industry line up and say, is truly remarkable of India-Bharat story. Our nations may be separated by thousands of miles geographically, but that vast distance can diminish with the warmth between our people, that living bridge. And there is so much in common between our two nations. I'm going to park the whole theory of cricket for a moment, but that is an important bridge. And to those nations represented here who don't quite understand cricket, I assure you we, the UK and India, stand together in helping you understand this great game. But India's leadership, and in congratulating the Prime Minister and indeed the whole government of India on G20 last year, was a true testament to its determination. And I'm grateful to my friend, the Minister for External Affairs, Jaishankarji, for your leadership during that occasion, along with Prime Minister Modi-ji as well. And I'm really confident, Prime Minister, that this living bridge of people and ideas and innovation will truly make our partnership a potent combination for the years ahead. And I just want to reflect briefly on the why this is. India is the second largest investor in the United Kingdom. More than 900 Indian businesses operate in the United Kingdom. Indian FDI in the UK is growing faster than any other country. And for our part, the United Kingdom has a unique mix of world-class expertise and indeed talent. Total trade in goods between our two nations stands at over £38 billion. That's close to $50 billion. And that's increased in the last year alone by 24%. And that demonstrates the real strength between the two nations. The United Kingdom is the most globally connected economy in the G20, ranked second globally for soft power, and the first in the G7 for international research, collaboration, and impact. And I know those are important sectors right here in Gujarat and for India as well. And we've heard already a great deal about green finance. London is also #1 globally for green finance. And that's why we are truly ambitious. We are excited by the potential of our partnership with India and in particular with the state of Gujarat. And the United Kingdom is collaborating on many exciting projects in how we develop our relationship with Gujarat as we move forward. Take, for example, the Statue of Unity, designed by UK architects, Arab, which now stands tall as a symbol of a new, confident India. Or the JCB factory, designed by Mott MacDonald, whose machinery is now powering India's incredible infrastructure development. But, Prime Minister, Chief Minister, we want to go further. We want to do more. And of course, we understand the power of education, and we're proud of the strong association between India and the United Kingdom when it comes to our education sectors as well. When you power someone, an individual, no matter where in the world, through education, you empower them, their families, their communities, indeed their nations. And I know, Prime Minister Modi-ji, what a priority this is for you. And it is also live right now. We have just signed a MOU to enable closer collaboration between our higher education institutions. We want to go further in the areas of the creative economy, nurturing artists and boosting cultural exchange. Be in no doubt, business links will continue to grow, creating jobs and prosperity, whether it's from here in Ahmedabad to Aberdeen in Scotland in the United Kingdom. Our old friendship is blossoming into a new partnership. Bharat और ब्रितानी एक बहुत गहरी दोस्ती है, एक जिंदा
संबंध है. It is a true friendship, a lasting friendship, a deep friendship, and a binding friendship and partnership for today and the future. हमारी तरफ से आपको चीफ मिनिस्टर साहिब, गुजरात इस मौके पे आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Thank you very much, sir. We now invite His Excellency Mr. Vahan Karobian, Minister of Economy, Armenia. Honorable Excellency Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Chief Minister of Gujarat Bhuendra Bhai Patel, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the vibrant Gujarat 10th Global Summit. As Minister of Economy of Armenia, I'm delighted to share the remarkable strides of our nation has made, especially in the realm of technology, trade and investment. Our economy is doubled in 3-year time, and economic boom has not only reshaped our domestic landscape, but also positioned Armenia as the most advanced economy within the Caucasus and Eurasian Economic Union. In the burgeoning tech sector, dynamic trade environment and attractive investment opportunities in Armenia have drawn global attention. Our commitment to continuously improving a business-friendly environment is evident in our progressive policies, which have been instrumental in catalyzing growth and innovation. For example, with our good friends from United Arab Emirates, we managed to increase our mutual trade by 10 times to $2 billion in just 2-3 years, building firm trade bridges between different fragments of the world economy. A pivotal aspect of our economic narrative is the increasing movement of trade and investments between India and Armenia. This bilateral investment flow is a testament to the deepening economic ties between our nations. It's heartening to see Armenian investments finding a fertile ground in India, and likewise, Indian investments flourishing in Armenia. We see investments in high-tech manufacturing, metallurgy, mining, jewelry and diamond cutting, and other sectors. Armenia may also contribute to semiconductor efforts of Gujarat and India, especially in R&D services. We have homed R&D centers for several semiconductor companies, such as Cisco, Microchip Technology, AMD, Siemens, NVIDIA, Synopsys, and others. Given this promising potential, it's crucial for both the Armenian and Indian governments to further encourage and develop this mutual trade, logistics, and investment opportunities. By doing so, we can unlock new avenues of collaboration, foster innovation, and pave the way for a prosperous future. Armenia's strategic position within the Eurasian Economic Union opens up additional prospects. Leveraging this position can benefit businesses looking to tap into the expansive Eurasian market, facilitating industrial development, trade, logistics, and joint ventures. Honorable Prime Minister, recently, Prime Minister of Armenia announced Crossroads of Peace project that is aimed to strengthen logistics and economic connectivity across the region. As we convene at this summit, I offer you to explore the logistics opportunities to connect India and Europe via Iran's Chabahar, Armenia, and Georgia. This multimodal transport route, which is under development now, may become a competitive linkage between Europe or Eurasia and India. For centuries, Armenian traders were actively engaged in trade between India and Europe. Let's strengthen our ties again, embark on new ventures, and march towards a future marked by shared success and mutual growth. Thank you for the honor of presenting Armenia at this prestigious summit. Together, let's build a framework for sustained cooperation and mutual investments that benefits both our great nations
and the region as a whole. Let's build the gateway to the future. Thank you. Thank you very much, sir. We now invite His Excellency Mr. Teeth Risalo, Minister of Economic Affairs and Information Technology, Estonia. Prime Minister, Chief Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, Namaste, or Tere hommikust, as we say in Estonian. I believe India is a spiritual country where people believe still in miracles. And let me present you one straight away. It's me standing here representing the Republic of Estonia, free and independent country with a population of 1.4 million. Archaeology tells us that Estonians have been living in the same place for 5,000 years. But from the written history of 1,000+ years, we have been independent only 50. Despite that, we have maintained a unique culture and a full-blown, unique language and a full-blown culture. We regained our independence only 30 years ago. We started from zero. We had devastated economy, zero capital, and no major natural resources. For now, we are widely recognized as first and one of the most advanced digital societies. Estonia is a global leader in harnessing the power of technology for its citizens. But the truth is, miracles just don't happen. You have to work hard to arouse them. And that's why we are here, to work together with nations and regions who share the same values: democracy, rule of law, market economy, drive forward. India certainly has an instrumental role to play that those values prevail globally. You have proved it repeatedly, most recently with the excellent execution of the G20 presidency. Thank you again, Prime Minister Modi, for the leadership. Estonia is ready to work with you and offer our best knowledge on digital public goods, on e-governance, cybersecurity, green tech, educational technology, and personal medicine. And we know India grows when the states grow. So we're happy to work on all this with Gujarat, because Gujarat means growth. And then, if we work hard, we know the reward. In the end, the truth alone trumps. Thank you. Hope for a good cooperation. Thank you very much, sir. We now invite His Excellency Mr. Riyad Mazzour, Honorable Minister of Industry and Commerce, Morocco, for his address. Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhavendra Patel. Honorable Head of States, Chief of Governments, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, it's my honor and distinct privilege to address this esteemed assembly at the 10th Vibrant Gujarat Global Summit, representing the Kingdom of Morocco. I'm deeply grateful
for your gracious invitation extended by the government of Bahrain. This marks a significant milestone as Morocco proudly participates as a partner country for the second time in this globally acclaimed summit. This summit, an initiative that we owe you, Prime Minister Modi, that we owe to your leadership, stands as a beacon of opportunity, not only in fostering business projects, but also in fortifying the enduring bonds of cooperation and friendship that so splendidly unites Morocco and Bahrain. The historical visit of our beloved King Mohammed VI to Bahrain in 2015 and his meeting with you, Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi, marked a new era in the cooperation between my country and Bahrain, raising the level of bilateral relation to a strategic partnership. Even our beloved king at that time expressed his admiration for the Indian model, which has succeeded in emerging as one of the largest world economy. Let me comment on what has been said beforehand. Prime Minister Modi, you made Gujarat as an engine of growth for Bharat, but you made Bharat as the engine of growth of the world. Morocco, for its part, has also evolved positively, showing a regional leadership in advanced sectors, such as automotive, aerospace, semiconductor, and fertilizer industry, coupled with a significant transformation of historical sectors such as textile and agri-food. All sectors have been performing remarkably well despite successive crises, which confirm the undeniable success of the industry policy of Morocco, Gujarat, and Bahrain. Since then, our two governments have worked tirelessly to achieve the objectives set. Today, there are almost 50 agreements and MOUs signed in various sectors. Today, there are also 45 Indian companies established in Morocco, while there were only 13 in 2015. Today, our exchanges have tripled from $1.4 billion to $4.2 billion. Today, Gujarat, India, has hosted the most important Moroccan investments in Asia. This is a testimony of the great momentum that had been injected into Moroccan-Indian bilateral relations, and I'm confident this will continue to grow as both of our nations share a commitment to economic growth, sustainable development, and mutual prosperities. Ladies and gentlemen, under the guidance of our beloved King, Morocco has embarked on a transformative journey, guided by a strategic development roadmap that has steered the nation towards openness and remarkable progress. In the face of supply shocks and succession of global crises, Morocco's resilience has been extraordinary, showcasing its agility to navigate through multifaceted challenges with innovative solutions. Indeed, our country's GDP has tripled in the last 20 years, and we multiplied our manufacturing export by 6 since 2000. Today, 87% of our export are manufactured products. Today, Morocco is the first manufacturer of cars in Africa and one of the most competitive countries worldwide in producing cars and renewable energy. Well, the best and the most competitive country in producing cars is still Bahrain. Moreover, thanks to our ideal position as a continental and world-class hub, its free trade agreements giving access to more than 100 countries and 2.3 billion consumers, and its political and monetary stability,
Morocco offers great opportunities for investors to settle. Ladies and gentlemen, given the commitment of my country in accordance with the high rural vision to the promotion of an active, solid, and supportive cooperation in a spirit of co-development and shared growth, Morocco and Bahrain can work closely through a South-South triangular cooperation to promote growth in Africa, India, and in the world. Indeed, our strategic partnership should also enable our countries to develop joint initiatives that include the entire African continent in the process of industrializing and developing economies, but also to ensure food and health securities. Ladies and gentlemen, the time is ripe for Morocco and Bahrain to forge a stronger, more dynamic partnership by leveraging our respective strengths and addressing the challenges together. We can create a future marked by shared prosperity, innovation, and growth. Thank you very much. Thank you very much, sir. We would now like to welcome His Excellency Mr. Prakash Sharan Mahat, Finance Minister of Nepal. Right Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel ji, distinguished participants, ladies and gentlemen, warm greetings from Nepal. Namaskar, Namaste. At the outset, let me express my sincere gratitude to Honorable Bhupendra Bhai Patel ji, Chief Minister of Gujarat, for inviting me in this August gathering. I am deeply honored and privileged to be a part of this vibrant Gujarat Global Summit 2024. This global forum for business networking, knowledge sharing, and strategic partnerships for fostering sustainable and inclusive growth has now been a forum for all. Modi ji had envisioned vibrant Gujarat concept in 2003. Under your visionary leadership, this idea of entrepreneurial spirit of Gujarat has now been translated into vibrant India. India is now a major global economic power. I also like to commend Modi ji for your transformative leadership during G20 presidency, which has brought this mechanism to a next level. That is, you have made this more inclusive and broader. Vibrant Gujarat development model, which you are translating nationwide, has been a source of inspiration for many countries, including Nepal, is now managing financial resources and technological know-how for addressing economic, social, and environmental challenges of our time. Nepal and India, actually, Bharat, since thousands of years, have common places of great Hindu and Buddhist religious worships. And we are visiting each other's places since ancient times. I am happy to inform you that visitors from Gujarat are one of the largest in Nepal.
I still have fresh memory of Modiji's statement delivered in our parliament in 2014, particularly your emphasis on HIT, that is highways, information ways, and transmission ways. I am happy to share that we are working together in all these areas to improve connectivity, strengthen market linkages, and to reduce transaction costs. Recently, Nepal and India have signed a long-term power purchase agreement of exporting 10,000 megawatt of electricity to India over 10 years of time. This will immensely open up investment opportunity in hydropower in Nepal. It will also contribute to achieve green energy transition target not only for Nepal, but also in India. Situated between two global economic powers, Nepal has adopted liberal, market-oriented economic policy since the early 90s and is a member of several international organizations and multilateral agencies. And we are implementing trade and investment policies and regulation of international standards. Nepal provides investor-friendly regulatory and legal framework with macroeconomic stability and rule-based democratic political system. Our legal system prohibits nationalization of private enterprises and properties. We guarantee national and non-discriminatory treatment to foreign investment. Those who have invested in Nepal are enjoying good returns on their investment. The abundant natural and educated human resources, together with potential domestic and export market, ensures attractive return for prospective investors. There are huge untapped investment opportunities in Nepal in energy, tourism, agribusiness, and ICT. There are also other potential areas of investment such as health, education, manufacturing, construction, transportation, mining, banking, and financial services. Nepal is organizing Investment Summit in April 28 and 29 this year in Kathmandu. I would like to use this occasion to cordially invite all captains of industries and entrepreneurs from India and other participating countries for your valuable involvement in this summit. I hope your innovative business ideas and investment decisions will be a milestone for unlocking growth potential of Nepal. Once again, I would like to express my sincere thanks to the state government of Gujarat for providing me this opportunity to witness remarkable confluence of minds and energies in vibrant Gujarat Global Summit. I wish for the grand success of this summit. Thank you very much. Thank you very much, sir. We now invite His Excellency Mr. Tran Lu Quang, Deputy Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, to deliver his address. Thưa Ngài Narendra Modi, Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ, thưa Ngài Thủ tướng bang Gujarat, thưa các vị nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước, thưa toàn thể quý vị. Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Gujarat đầy sức sống lần thứ 10 với chủ đề Cửa ngõ vào tương lai tại bang Gujarat, quê hương của vị lãnh tụ vĩ đại
Mahatma Gandhi của đất nước và nhân dân Ấn Độ anh em, quê hương của Ngài Thủ tướng Narendra Modi. Với quy mô ngày càng lớn và sự tham gia đông đảo của lãnh đạo và doanh nghiệp Ấn Độ cũng như các nước, Gujarat đầy sức sống đã thể hiện rõ tầm nhìn của Thủ tướng Modi và nỗ lực của bang Gujarat, góp phần khẳng định sự hấp dẫn cũng như vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của Ấn Độ. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường. Dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Chúng tôi đánh giá cao việc hội nghị lần này tập trung thảo luận những động lực, xu thế phát triển mới, trong đó có kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thành phố thông minh. Đây cũng là những lĩnh vực ưu tiên trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Để thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực nêu trên, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi cho rằng các chính phủ cần tạo lập khuôn khổ chính sách, pháp lý và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, minh bạch, công bằng, triển khai các chiến lược, kế hoạch một cách nhất quán. Nguồn vốn từ đầu tư công của chính phủ cần đóng vai trò dẫn dắt, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ và thu hút hiệu quả các nguồn lực của khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài. Trong hợp tác quốc tế, cần đưa các lĩnh vực này thành nội dung hợp tác chủ đạo và ưu tiên dành nhiều nguồn lực hơn nữa để hiện thực hóa. Các nước phát triển cần tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển về vốn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, quản trị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực. Là nền kinh tế phát triển nhanh và năng động, có quy mô lớn thứ 5 thế giới, Ấn Độ hoàn toàn có thể và đang ngày càng phát huy tốt hơn nữa vai trò dẫn dắt trong tiến trình này. Thưa tất cả quý vị, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng phát triển trên các lĩnh vực. Việt Nam trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Ấn Độ trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Ấn Độ nói chung và bang Gujarat nói riêng, nhất là trong các lĩnh vực có thế mạnh của Ấn Độ và phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam. Trong đó, nhiều lĩnh vực sẽ được trao đổi tại hội nghị lần này. Là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo một điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư, kinh doanh lâu dài ở Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng, bền vững ở khu vực và trên thế giới. Xin chúc Ngài Thủ tướng Modi, các vị lãnh đạo và toàn thể quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, sir. We now honored to invite His Excellency Mr. Petr Fiala, Honorable Prime Minister, Czech Republic, for his address. Honorable Prime Minister Modi, Chief Minister Patel, Presidents, Excellencies, ladies and gentlemen. First, please let me congratulate you on 20 years of this successful summit. I'm excited to see Gujarat's impressive economic growth and to feel the energy of the largest democracy in the world. Thank you, Chief Minister Patel, for your kind hospitality. It is a real pleasure to be here. Ladies and gentlemen, the topic of this summit is Gateway to the Future. It is a big inspiration. We are at a special point and can choose our future. It is a time of dramatic risks, but also of great chances, because the problems of today are very complex. It is not wise to concentrate on only one strategy. I think the humanity needs to work with three main priorities, three keys to unlock the gateway. The first key is innovation and new technologies. The second key is advanced industry.
And the third key is applied research, which benefits the public, like in health and medicine. Please let me tell you about the position of the Czech Republic. The first key is innovation and new technologies. My country is quickly moving to a higher value economy. We are changing our education system, and we want stronger accent on STEM subjects. We also support innovation and partnership between universities, research institutions, and private sector. Maybe you know some innovative Czech brands. For example, the software security company Avast or the online ticketing global player Kiwi. My government is mainly interested in long-term strategic investment. This includes AI research, electromobility, and especially semiconductors. They are key for high-tech industries today, from cars to mobile phones. We also pay close attention to innovation in the energy sector. Unlike many European countries, we believe in the future of nuclear power. We have 50 years of expertise in nuclear power. Our top interest is development of small modular reactors. On this way, we want to work with leading global makers. It is also a chance to improve our Czech-Indian capacities in nuclear energy research. We are very serious about innovation in renewable energy and green digital technologies. The goal is to have reliable, efficient, and sustainable energy. This is about clean environment, and the potential for Czech-Indian collaboration is great, not only in energy, but also in wastewater treatment or in sustainable agriculture. The second key to our future is advanced industry. My country is a great exporter of high-quality industrial goods. I am sure that you know some of the traditional Czech brands. Bata, Škoda, Tatra, or Java are well established in India. Our companies are leaders in land transport. Škoda Auto produces cars here and has a new logistics center in Pune. It can be active and make India e-mobility hub of tomorrow. We also have great railway cars makers. Czech companies build wheel sets here in India. And we offer solutions for cities, trams, hydrogen buses, or smart transport systems. We have many advanced companies in space industry. It is very strong in the Czech Republic. Their products are parts of rockets and satellites from the European Space Agency and others. Our aerospace and defense industry is always ready to help our friends in India. In all sectors of our industry, we are proud of traditional and new products and their quality. The